So, what was your journey? How did you get started, and how did you get there, get to this position? And what was your journey actually? So my name is Nida Siddique. I am currently the head of e-commerce at Alkaram Studio. So my journey started off in the e-com industry through TCS, Levo.com. I was part of the first core team Mm, that was responsible to get the Levo platform as a marketplace back then to have it up and running. I was looking into women's category and I had about 50 to 60 vendors on board under my belt. It included big brands like Alkaram and Bulema and all of those as well. Apart mm, from that, I also had tier two and tier three vendors as well. You know, like small city vendors. I was managing those as well. From there, I was approached by Bonanza. I actually reached out to them to have them onboarded at Evo, but then it turns out they want to develop their own e-com. So I was hired as an in-house resource. I have been leading Bonanza. I had been leading Bonanza, e-commerce of Bonanza for about like 5 years. And mm, until I joined Alkaram, which was last year, it's been 1.5 years at Alkaram as well. And yeah, this is my journey. And before, if I go back, apart from the e-com journey that I've had, I was part of the content business. Like I was working with Brand Crew. I was working with Beautiful You. It was a Unilever platform where people could just write content, go cover mm, events, write about them. It was all fashion. But then e-com, why? Because I realized that I wanted to do something more concrete, and I realized that fashion was something that I could just be doing on the side as well. It could be a side mm, gig, but I mean, not to undermine anyone's work, whatever they're doing, great, but it was just not for me. So I decided to enter into the e-com industry. This was back in 2016. So garage आया था back in 2014, and mm, it's the काफी boom था. So I realized to I have to step into this industry because it was new back then in Pakistan. So I thought there was a lot of potential and I would just learn something new. So it was a risk that I took. It was uncomfortable because there were so many things I had to learn. I did not mm. know how to use Excel before that. But then Okay. thanks to ecom, now I'm just crunching numbers every day. So this is a little bit about me. Interesting, interesting. So when you're coming into this industry, so you will have faced so many challenges. So can you please shed some light on the challenges and how did you overcome? Yeah. So जैसे मैंने बताया that I was part of the fashion industry before. Like I was just writing content, curating content, going and covering events. So जब I joined e-com industry, so it was purely numbers and order management and the end-to-end management of any vendor that we had on board, from getting them Mm, onboarded on the platform to making sure that their products are onboarded. इसमें catalog भी आपको देखना पड़ता है, and then making sure that the order is delivered to the customer end-to-end last mile delivery भी, प्लस फिर कोई कस्टमर कंप्लेन हो तो उसको सीएस के थ्रू रिजॉल्व करवाना. तो ये mm, थोड़ा सा चैलेंजिंग था फॉर द फर्स्ट ईयर बिकॉज मैंने टू बी ऑनेस्ट उतना ज्यादा एक्सेल इस्तेमाल किया नहीं था पहले. एक सॉफ्ट स्किल जो था वो नहीं था मेरे अंदर. आई mm, हैव नो शेम ऑफ एक्नॉलेजिंग दैट. But right. when I started number crunching, that was something I learned on job, and I learned a lot of things about legal issues. I've learned how to do CS. I've learned how to do manage last mile delivery. So these are the things I learned over the time, and I felt at that point I think that was a challenge that I was able to Mm, surpass, and here I am sitting today managing ecom. So, and Alhamdulillah, I mean, I've been the first female head of ecom in the retail fashion industry. So that is something I am super proud of. Alhamdulillah, thanks to everyone who supported me in my journey, especially my parents and everybody else who were part of my journey. I've learned a lot to everybody who's helped me, my team as well. So ये कुछ challenges थे जो initially face किए. Plus अगर हम बुनाता की बात करते हैं तो वहाँ पे I had to step down to the warehouse as well. I was okay, managing nice. warehouse as well. So उसके अंदर मेरा सबसे बड़ा challenge ये था कि I had to go down and meet everybody there and make sure that warehouse is up and running. तो उसमें आपको आप जिस लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं वो हर स्ट्रेटा के होते हैं. आप मजदूरों के साथ भी आप कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं. That's when I realized कि अगर आपको किसी से काम करना है तो एक तो सबसे पहली important चीज है you have to give everybody the due respect. You can't just command respect. You have to deserve and earn it. Mm-hmm. एंड सेकेंडली आपको किसी से बात करना है तो आप उनके लेवल पर आकर उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ती है. सो Yes, वो कुछ absolutely. चैलेंजेस थे जो शुरू में. और आई वॉज यंग लीडर बैक Mm-hmm. Okay. देन. आई थिंक आई स्टिल एम. तो आपको कुछ चीजें होती हैं जो ओवर द टाइम you learn the soft skills, you learn the technical skills as well. So these were the Mm-hmm. challenges I faced. All right. तो मजदूरों के साथ कम्युनिकेशन कैसा था?
मजदूरों के साथ ओके, आई बी ऑनेस्ट। सो इनिशियली जब मैं वेयर हाउस में उतरी थी, तो उनको तो पहले समझ नहीं आया कि ये कौन है, मतलब ये कौन है जो, या ना वो ऋषि वाशी रोमिंग अराउंड, ये क्या बात करेंगे क्या करेंगे। और तब मैंने रियलाइज किया कि इनको ऐसे समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आई हैड माय ऑपरेशंस मैनेजर विद मी, हु वाज देयर टू सपोर्ट, एंड बेसिकली हु वाज मैनेजिंग द एंटायर वेयर हाउस। बट फिर हमने जब उनको सबसे को लाइन से खड़ा किया, फिर उनको बताया कि देखिए, हमें अपने ऑर्डर्स निकालने हैं, हमारा पहला जो है नवंबर सेल है हमारी, और हमें इसमें अपने ऑर्डर्स निकालने हैं, तो हमें सबको डेडिकेट करना पड़ेगा टाइम, और हमें अपने मेक श्योर करना है कि क्यूसी प्रॉपर हो, हमारे पार्सल सही से डिस्पैच हो रहे हो। तो वो सारी कॉन्वर्सेशन जब मैंने उनसे ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज में, आप समझिए उर्दू में वाकई बात करना शुरू की। आपको अपना पूरा हुलिया उस तरह से करना पड़ता है कि आप हाँ। बिल्कुल कोई एलियन ना लगे सबके साथ। सो कुछ चीजें आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी ट्रांसफॉर्म करनी पड़ती है कि आप बात करें तो आपका लहजा किस किस्म का है। आप मजदूरों के साथ बदतमीजी से काम नहीं करवा सकते, आप उसे कमांड नहीं कर सकते। हर तरह के लोग होते हैं। तो आपको जो जितनी रिस्पेक्ट आप उनको दे सकते हैं, द सेम टाइम आपको अपना एक डिस्टेंस भी मेंटेन रखना होता है आपके साथ, कि भाई सही है। आपके और उनके जो इश्यूज होते हैं वो बहुत अलग किस्म के इश्यूज होते हैं। जो आपके हेड ऑफिस के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके इश्यूज बहुत डिफरेंट होते हैं, और जो उनके इश्यूज होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं while they work. ट्रू। I'm not talking about personal issues. So वो फिर आपको उसमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि वो आपकी रिस्पेक्ट भी करें, आपका काम भी करें, पर उनको ये भी पता हो कि भाई हमें यहाँ इतनी बात हम कर सकते हैं, और इससे ज्यादा हम आगे बात नहीं कर सकते, या इतनी चीजें जो हम डिस्कस कर सकते हैं अपने मैनेजर के साथ, या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे लिए आई थिंक आप डोंट डू। अमेजिंग, ट्रूली। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी, वेयर हाउसिंग भी देख ली, ई कॉमर्स भी देख लिया, एंड माशाल्लाह हेड ऑफ ई कॉमर्स, फर्स्ट फीमेल वुमेन लेड हेड ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान यू आर। सो पर्सनल ब्रांडिंग पे आते हैं, बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड is very crucial in today's digital age, right? And जी। so how did you go about establishing your own brand as an influencer, and what do you advise to others for looking for the same? अच्छा देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग में ना भी दो, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैं क्यों से सेंसिटिव कहती हूँ, इट्स Okay. अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, देयर इज नथिंग ऑब्जेक्टिव अबाउट इट। Subjective in Mm-hmm. terms of what? That your personal brand should be built on not just fraud but substance. सब्सटेंस क्या होता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपने चीजें अचीव की हैं लाइफ में, जो आपने परफॉर्म करके दिया है, जो कंपनी के साथ आप एसोसिएट हुए हैं, उन्होंने कितना ग्रोथ किया है। जो ग्रोथ कंपनी की होती है वो डायरेक्टली अलाइन होती है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग से और आपकी पर्सनल इंडिविजुअल ग्रोथ से भी। तो बहुत से Mm-hmm. लोग मैंने देखा है, और मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट एज मच, बट आई फील कि लॉट ऑफ टाइम्स जस्ट टू बी फीचर्ड इन समथिंग, because I know somebody, oh that's my PR agent, just go ahead and feature me. वो चीजें बहुत आपको लास्ट लॉन्ग नहीं करती हैं, they will not take you for a long ride. If you want to Right. build a brand, you have to do it on the basis of the substance, on the basis of your proven track record कि हमने ये चीजें की हैं। क्योंकि वैसे तो बहुत इजी, आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, हर कोई कहेगा कि अच्छा मैं यहाँ पे भी गया, वहां पे भी गया, यहाँ पे भी गई, ये भी किया मैंने, वो भी किया। बट क्या एक्चुअली में आपने वो किया है क्या? अगर आप चार Mm. लोगों के इंडिविजुअल के सामने बैठेंगे कि आपने वो बाकी चीजें, आपके पास नॉलेज है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप इम्पोस्टर सिंड्रोम में ना पड़े, दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन। बट कुछ पोटेंशियली यू शुड हैव डन समथिंग, शुड हैव अचीव समथिंग, एंड दैट्स प्रूवन बाय द नंबर्स, दैट शुड बी प्रूवन बाय एनीथिंग दैट शुड रिप्रेजेंट योर वर्क, और योर वर्क विल टेक यू लॉन्ग वे। Just on the basis of the fact that you are all out on LinkedIn or on Facebook or Instagram, whatever medium that you have, wherever you are influencing everyone, people will be able to. It's a digital medium. People will be able to call you out any second. The moment you are appearing too much, or the moment you are just not appearing, people will be able to call out and say, "क्या अच्छा we know this person." सही है, प्रेजेंस तो है बट काम वाम नहीं आता, या फिर चलो सही है, बहुत से ब्लॉगर्स हमारे हमने देखे हैं कि वो क्या करते हैं, वो दे टॉक अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी, or they Mm-hmm. talk about positivity in terms of your skin color, but then they go on and they associate themselves to a fairness cream brand, or for the matter they associate themselves to any Ponzi scheme. So people have the audience that you have, they will call you out. क्या आप ये बात करते हैं and then you are supporting this, so ये गलत है। दूसरा सबसे important बात ये होता है कि if you're a business type of decision maker that makes you influencer, you need to have the right collaborations that needs to be done. Don't give out businesses to people on the basis of the fact that you know them or they're your friends, but do it on the basis of merit. Because end of the day, your friendships might just restrict you from actually delivering the work that the organization requires from you. So it's very important to have merit decisions.
तो उसमें आपकी ब्रांडिंग भी इस तरह से सबके सामने हो जाती है कि भाई दे दीज गाइस आर दिस, और कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मेरिट, वो मेरिट पे देखेंगे, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो उनको हम उनसे बात करें तो वो हमारी चीज हो जाएगी, अगर हम डिलीवर कर सकते हैं, दैट्स ओनली देन दे विल बी एबल टू कोलैबोरेट विद अस। तो कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी एथिक्स जो है ना, आपको अपने पे स्ट्रांगली होल्ड करने पड़ते हैं in order to be a good influencer. That's what I feel. That's really interesting. And how do you see the influencers over, because आप brands के साथ भी काम कर रहे हो और influencers के साथ PR and all those things. So how do you see the TikTokers, because वो तो like कुछ महीनों में ही See, मेरा मतलब पर्सनल ओपिनियन इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, okay. और इट माइट बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन। इफ देखो, सी, रिस्क अल्लाह आपको देता है, वो कहीं से भी आपको कैसे भी मिल रहा होता है, यू डोंट नो, देयर इज नथिंग एनीबॉडी कैन गिव एन ओपिनियन ऑन। मे बी दैट्स Hmm. व्हाट God's way of giving them the platform, and that's their way of making bucks that they're making, and that's their way of getting the popularity. Popularity could be negative, popularity could be positive. A lot of people Right. get popular through these some, I would use the word, cheap stunts as well. But then Mm-hmm. how long does it last? Maybe Exactly. 2 months, maybe 3 months, and ये तो फास्ट पेस मीडिया में आजकल हम भूल जाते हैं हमने कल कौन सी मीम देखी है। मीम कल्चर बनता है, एक ट्रेंड बनता Mm-hmm. है, एक महीने का, 15 दिन का, उसके बाद इट्स डाइज डाउन। व्हाट विल Mm. लास्ट यू लॉन्ग इज द सब्सटेंस। आई वुड अगेन स्ट्रेस ऑन दैट, ये सब्सटेंस आप क्या क्या दे रहे हैं, क्वालिटी आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट That's इज मोर very इम्पोर्टेंट। important. That's really very important. Okay, जी, looking ahead, what is the envision for the future of e-commerce in Pakistan, and any exciting development you're seeing or any opportunity particularly excited about? to be very honest, e-commerce is obviously booming. See, now a lot of people, a lot of people, the kinsmen we have in Pakistan, they are involved in Amazon. A lot of people are Mm-hmm. venturing into local e-commerce as well. And somehow having a website, having your own .com, adds a layer of authenticity to your brand. I have seen people, small SMEs, niche brands who are actually, let's say मैं fashion की बात करती हूँ, स्किन केयर की बात करती हूँ, ब्यूटी की बात करती हूँ, तो वो बहुत सारे लोग अपने ब्रांड्स के साथ अब इंडिविजुअली एंटर हो रहे हैं मार्केट के अंदर, एंड दैट्स अ गुड थिंग दैट they're creating employment for everybody else, and they're trying to work from home, they're trying to build a business, they're trying to build a voice for themselves. What Mm-hmm. happens is if you add an .com layer to it, what it helps you, it authenticates your entire experience. Because personally भी अगर मैं किसी ब्रांड से परचेज करती हूँ, अगर मैं कोई इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई ब्रांड पेज देखती हूँ, या किसी का मैं कोई लाइव सेशन देखती हूँ, जैसे अब तो बहुत सारा, अब आई डोंट नो इफ इट्स, अगेन आई एम नॉट श्योर इफ इट्स legal or not, but people sell Amazon parcels, Alibaba parcels as well here. जो Okay. पार्सल्स को देख के वो लाइव कॉल्स, लाइव अपना वीडियो कॉल्स, वीडियो लाइव सेशंस कर रहे होते हैं। Um, I have seen a lot of families doing that, and I've seen them creating their own .com as well now. It Oh. adds a layer of authenticity. Why? Because I know कि इन्होंने एक investment की है, इन्होंने एक अपना brand build Mm-hmm. किया है, ये exist करते हैं, maybe मेरा experience में शायद अच्छा हो पहली बार, maybe ना हो, but I will give them a chance because I know that they have a website, they are investing, they are running ads, so I know that they actually exist. Instead of just me ordering via any Instagram page, ना, तब मैं भूल गई, मैंने उसको बैंक ट्रांसफर कर दिया कि वो कहाँ गया, मैं कहाँ से उसको पकड़ा। मगर दिस रियली हेल्प्स बिकॉज फिर आप फेसबुक पे रिव्यूज दे सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे रिव्यूज दे सकते हैं, तो आप प्लेटफॉर्म से फिर उनको पेनल्टी भी लग जाती है कि अच्छा यू नॉट, Mm-hmm. उनका फेसबुक स्कोर गिर जाता है कि अच्छा भाई यू नॉट डिलीवर द पार्सल्स ऑन टाइम। True. So I feel that e-commerce is booming, and I think every SME is now involved in selling something or the other online. Brick and mortar again in Pakistan would last because हमारे पास कोई entertainment के avenues नहीं है। लोगों का Mm-hmm. entertainment यहाँ पे क्या है, True. शॉपिंग, खाना पीना, दैट्स इट, यही है। और स्पेशली Exactly. कराची में तो यही है, मतलब कराची में तो कुछ और है ही। सो पंजाब भी ऐसा ही है। दैट विल लास्ट, but again, for a developing country like Pakistan, um, Mm-hmm. e-commerce is something that will boom, and I think I'm pretty sure in another 5 years, AI will obviously take over. It is already taking over. Things will become far more easier, and Mm-hmm. people would be running businesses through e-com while sitting at home. Yeah. Oh, nice, interesting. So AI, I will discuss this as well, and I have doing some research, and I got to know that when you were working with Bonanza, so you guys taken AR technology as well onto your website. I'm happy you mentioned that. Not a lot of people know about it. I'm very happy to mention that. Yes, back in 2020 जब हमें Bonanza की वेबसाइट पे हमने माइग्रेट किया था,
So I'm always looking for a way to innovate the customer experience that I'm offering to my customers, right? I don't want it to be run of the mill show के बस एक वेबसाइट है उसमें प्रोडक्ट्स हैं और आ जाए और मैं ये obviously अब अलकरम में इस वक्त हमारी कैटेगरीज बहुत लिमिटेड है तो हम बहुत सारा एआर Mm-hmm. एक्सपीरियंस किसी को ऑफर कर नहीं सकते तो बनांजा में हमारे पास वो एक गैप था बिकॉज बनांजा इज अ वेरी it's a traditional brand. People Mm-hmm. know about it. Your parents know about it. Boomer generation knows about it. Everybody knows it's a legacy brand, right? लेगेसी Mm-hmm. ब्रांड का प्रॉब्लम क्या होता है चाहे वो अलकरम हो या गुल अहमद हो या फिर बनाचा हो कि वहां पे लोगों को पता होता है इनकी क्वालिटी अच्छी है हमें पता है इनके प्राइस पॉइंट्स क्या है तो वो लोग जाते हैं वहां पे तो वहां पे चीजें बेचना कंपैरेटिवली इजी होता है बिकॉज आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक एक ऑलरेडी मौजूद होती है True. एज True. अपोज टू न्यू ब्रांड्स बट एक प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पे जो नया मिलेनियल्स और जेंजी है वो वहाँ से शॉप नहीं करते वो क्यों नहीं करते क्योंकि उनको एक कस्टमर एक्सपीरियंस मिल नहीं रहा होता जब Mm-hmm. बनांजा ने अपना ब्यूटी कैटेगरी लॉन्च की जिसमें कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स थे तो वी डिसाइडेड कि हम एक ऑगमेंटेड रियलिटी की टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं कस्टमर को जहाँ पे एक हमारे पास एक डिस्कनेक्ट था फिर स्टोर्स का वेबसाइट के साथ वेबसाइट was comparatively more fun and more interactive experience. So we wanted customers to come onto the website, Gen Z millennials ideally, to come interact with the website, interact with that feature, and then obviously add and purchase from us. So Mm-hmm. COVID भी था तो वहाँ पे आपको पता है hygiene के मसले थे. You couldn't test the product, so we thought to at that point this was the right move to do. So this is about the AR. That's really interesting. So this was the first website to take on the AR, and I think Yeah, uh, it was the first. Yes. there are not much websites. Even I don't think I've seen any other website so far taking on AR technology so far. Uh, आई थिंक एक तो मार्केट प्लेसेस हैं जिसने फिर एक तो कॉस्मेटिक आई डोंट नेम एनी ब्रांड्स दे हैव Okay. कोलैबोरेटेड एंड दे केम अप विद एन एआर टेक्नोलॉजी आफ्टर दैट बट बनाना वाज supposed to be the first. Amazing. Okay, so let's talk about the bit of AI thing, right? AI revolutionizing every single thing. Everything is getting automated. So how AI is automating the e-commerce businesses? Okay, I'll be honest, AI is obviously taking over everything. कंटेंट जो हम दिखाते थे एक कंटेंट राइटर हायर करके अब हमें शॉपिफाई से बहुत इजी हो चुका है शॉपिफाई का जो हमारा प्रोडक्ट पेज है वहां पर हम उसको ये भी इसको टोन भी बताते हैं कि टोन में प्लेफुल चाहिए या हमें Mm. टोन ऑफिशियल चाहिए या टोन हमें ट्रेडिशनल चाहिए और हम उसको बस दो चार कीवर्ड देते हैं वो हमें खुद हमारा जो एक कैप्शन है वो हमें क्रिएट करके दे देता है Yes, तो yes, yes. प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है इसको हायर करके Uh-huh. उसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है इट डिलीवर्स यू द डिस्क्रिप्शन इन विद इन लाइक 30 seconds. So Mm. that's how easy it is. And that's how it will help us build on our SEO as well. So AI is not only that, aapki even graphic designing. It's after artists. The other day I was Yes. having a conversation with my friend. She was saying it's definitely after our artists now, because आपको सारा नरेशन उसमें से मिल जाता है आप ईमेल Mm. अपनी ड्राफ्ट कर सकते हो डोंट सेंड somebody a nasty email you don't know the good and you is not letting you do it you tell AI even Snapchat के पास AI है Mm. स्नैपचैट का जो एआई का आपका तो वो तो सबसे क्विक है कि आपने उसको कमांड दिया कि ये मुझे चाहिए स्पेसिफिक कीवर्ड्स दिए उसने आपको ईमेल आपको लिख के दे दी तो आई थिंक पीपल विल बिकम लेजी ऑफ कोर्स बट देन आई थिंक दैट्स आल्सो हाउ यू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी for the best of what you can get out of it. So that's my Exactly. feedback. I'm using AI and I'm super happy with it. Oh, that's great, mashallah. So do you think AI will take over the jobs? It is already taking over the job. I don't want to sugarcoat it. Like I said, we don't need a content writer now. We just do it through our. But again, the content writer that we've had, वो उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका परफेक्ट वो उसका डिस्क्रिप्शन आता है but the content writer does it is obviously give it a personal spin to it and Mm. make things look it's saving up the content writer's time as well but at the same time of course in the future एक जमाने में देखें आपको पता है टाइप राइटर्स होते थे अब टाइप Exactly. राइटर्स का अब काम खत्म हो गया कंप्यूटर्स आ गए मगर अब वो लोग फिर वो कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करना शुरू हो गए तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अडेप्ट द टेक्नोलॉजी एंड नॉट बिकम टेक टेक्नोलॉजी एज योर एनिमी. So AI user will be there, but non-user will be left behind. They have to keep up with Most the pace I feel. probably इससे ये भी होगा ना कि पाकिस्तान में what I've seen is कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे एल्डर्स संभाल रहे हैं. So वो तो मोस्ट प्रोबेबली निकल जाएंगे सिस्टम से. So यंगस्टर्स ही रह जाएंगे, राइट? क्या कहते हैं? जी, that's true. That's true because millennials are your next are your new workforce, and then Gen Z will obviously come and be part of it.
So boomers will soon be out of the picture. I'm so sorry for saying that. But I guess it's about how you adapt to the technology and how you make the most use out of it. And that's true, 100%. And you're two times, I think you have mentioned the Generation Z. And I was just a bit analysis of Alkaram Studio, like जो अभी आपने new website उसका evolve up किया है. Yeah. I've seen it's mostly targeting the Generation Z rather than the millennials and other audience. So is that true, or what are your focus? No, to be very honest, we're obviously focusing on the millennials and Gen Z because they are the new workforce and they are the ones with the money now. And they are the ones who are Hmm. the decision makers and they have the True. buying appetite as well. But at the same time, we are, for legacy brands like Alkaram, like I would say, uh, Hmm. somehow we still have people 40 and up until 55 who are still buying from us. So this is a realization that we have done that people in the older generation as well, though the targeting is towards the millennials and Gen Z, of course, but जो इस वक्त पैसा है ना वो आपके 45 55 to 60 वाली जो ऑडियंस है उनके 100%. पास है और वो आप अगर नोट करें आपके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स हम सबने देखा है कि हमारे पेरेंट्स का ज्यादा कंजम्पशन है इस वक्त सोशल मीडिया का एज अपोज टू अस they're on the Absolutely. Facebook, they're on Instagram, they're literally, my dad's like literally everywhere. He's on Hmm. TikTok as well, for crying out loud. Then I've seen him engaging with the ads. I've seen that that generation has started ordering things online. They started using Food Panda. They started using these millions. They started hailing rides through these ride-hailing apps. So I feel कि हमने recently इनफैक्ट अब अगर मैं हम ये कहते हैं मैं आपको ये इंसाइट दे रही हूँ कि हमने Hmm. अब अपना जो एक सर्टन स्पेंड का परसेंटेज है ना वो हमने 50 to 60 वाली जो हमारी एज ब्रैकेट है उसको भी हमें टारगेट करना शुरू कर दिया है एंड वी That's आर true. गेटिंग क्लिक्स फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग कन्वर्जन फ्रॉम देयर तो इस Hmm. वक्त ये बोलना कि हम सिर्फ एक ऑडियंस को टैप करें वो गलत होगा आई थिंक वी शुड मेक अ गुड मिक्सचर and we should do A&B testing and realize from where we're getting good traffic and we're getting good conversion. Because technically अभी भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जो पैसा है आपका वो आपकी 50 से 65 वाली ऑडियंस के पास है. This is really interesting one for me, and bit of surprising as well that 50 plus audience is also there, and still the Yeah. consumption is there. Amazing. Um, so you have faced so many failures in your journey. You've been more than 10 years into this. What is the single most failure you call from your professional life? What was lesson learned, and how did you recover from it? Okay. So the personal failure professionally that I felt was okay. I'll share. So in one of these companies that I was working with, I actually was able to achieve my target. I was also able to do a digital transformation that was required by the company. Yet, Hmm. when I got my appraisal, I was not scored what I was expecting myself to be scored. दैट वाज अ हिट टू मी बिकॉज आई फेल्ट कि टारगेट भी पूरा आपने कर लिया आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो भी आपके पास आ गई तो फिर ऐसी क्या चीज रह जाती है आपके टेक्निकल स्किल्स में या आपकी डिलीवरी में जिससे जो आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है वो आपको नहीं मिला दैट आई फेल्ट I will not call it a personal failure or professional failure, but that was a learning lesson for me. Because maybe a lot of times you're delivering 100%, then that's when you need to realize you don't have to be negative about things. Hmm. Because, of course, life is just not a playful, colorful ground where everything will just go as per to your expectations. But my learning lesson from it was that maybe I need to be confident of what I deliver. I know what I've delivered. I need to be confident. I need to, work on my skills. I need to maybe advance what I need to learn in my whatever journey that I have. But at the same time, I told myself that I don't need to be bogged down by it because that is not, it could be anything uh, that does not reflect my professional journey. It just needs Hmm. to be something that I need to work on myself and I do not need to take it as a failure. I don't need to take it as a roadblock. I need to be confident in myself and I need to know and then to tell myself that I know what I'm made of. I know the potential that I have. I know I can overcome challenges and this could just be somebody's opinion and that it could just be something that has happened but that's not going to stop me from going further. So a lot of Hmm. times you face hurdles in your career path. A lot of times you face these
punches in your gut and you feel, oh, ye kya ho gaya? Maybe I'm not capable. So do not self-doubt yourself. That was a lesson learned. Never self-doubt. Maybe it could just be something else. Maybe it just could be soft skills. Maybe it could just be anything else that you can't put a finger on at the moment. Maybe it could just be, I don't know, anything. But at the Mm-hmm. same time, you don't need to get yourself bogged down. You need to focus on the goals that you have. You need to keep working on your skills. You need to keep improving yourself. And you need to know that you can achieve anything in the world and it's just not the end of the world. Maybe grass is greener on the other side. So yeah, It's interesting failure and इसमें थोड़ा सा अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वी गॉट अ कमेंट देख शायद अल्लाह ने इस मामले में नहीं तो आपके उस मामले में आपके लिए खैर रखी हो यू नो definitely, definitely. Because God knows, God has heard conversations that you have not. God knows what's best for you. And maybe a lot of times you go through personal struggles, a lot of time you go through professional struggles. But that's God's way of moving you from your comfort zone and telling you that you need to look ahead, look past it, and build yourself. कोई भी आपका failure जो है ना, it should not bog you down. Maybe obviously it will take a toll on you emotionally for like a day or two or maybe more, I don't know, depends on the person. बट आपको हमेशा उसका ब्राइट साइड दिखना पड़ता है कि अच्छा चलो ये हो गया ना, दैट्स फाइन, बट आगे मेरे लिए बहुत कुछ है. एंड आगे बहुत कुछ हुआ. नाउ टुडे आई एम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ e-com in the retail industry. I'm working and I have been able to deliver growth to multiple companies. I have achieved whatever I wanted so far, and there's a lot more to achieve. And also one more thing, कभी भी आप perfect नहीं होते. हर लेवल पे आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो हर किसी से. सो कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे अब सब कुछ आ गया है. मैं अभी भी बोलती हूँ कि मुझे अभी भी बहुत सी चीजें सीखना बाकी है. आई नीड टू इम्प्रूव माई स्किल्स. आई नीड टू लर्न सो मेनी थिंग्स. और स्पेशली विद द काइंड ऑफ वर्क दैट आई हैव, इट्स अ एवर evolving field that I have to keep learning and keep maturing my skill set. So कोई भी फेलियर आपका आपको बॉग डाउन नहीं करना चाहिए. It should be your route to success, or maybe God wants to take you to other places. And this has been my journey, and I feel that failure did not stop me from achieving whatever I've achieved so far. And today I'm here where I'm here. So good yeah, mindset good one so Pakistani audiences have their own preferences and culture nuances right Nida so how do you tailor your approach to resonate with the local audience and while staying authentic to the to your brand. to be very honest, we are a country of a lot of festivities. We are a country which needs a lot of boosting and morale developing in order to operate because of all the things that are happening, geopolitical conditions that we have, social political issues that we have. So we always need a mood booster somewhere or the other. I often say Shopify is the easiest platform to use. And that's true. Why? Because अगर Independence Day हो तो मैं अपनी वेबसाइट को ग्रीन एंड वाइट कर सकती हूँ. मैं Mm-hmm. नेशनल एंथम प्ले कर सकती हूँ. मैं जो है इसमें कन्फेटी थ्रो कर सकती हूँ. जस्ट टू Mm-hmm. गिव समबडी एन एक्सपीरियंस. जो उसको स्टोर में मिलता है वो वेबसाइट पे भी उसको मिले. ऑन द अदर हैंड जो भी ट्रेंड होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये पिंक ट्रेंड था, बाकी का पिंक फीवर, Mm-hmm. a lot of brands were delving into it. So we as a nation, we just need something little to excite us, to get us going, right? If you remember, I think last year की बात है, एक blackout हो गया था, power shutdown हो गया था, all Okay. across Pakistan, and that was for a good 15 minutes or 10 minutes. I don't know, I can't recall, 20 minutes. उसके बाद जो मीम्स बने हैं उसके ऊपर, तो हम हाँ. तो वो कॉम है कि हमारा डार्क ह्यूमर है. डार्क ह्यूमर कहाँ से आता है? ट्रॉमा से आता है. वी ऑल आर ट्रॉमाटाइज्ड वन वे और द अदर. आई आई हैव मेजर डार्क ह्यूमर. तो हम लोग फिर रिजॉर्ट करते हैं मीम्स पे. दैट गोज टू शो. कहते हैं कि फैसलाबादियों का बहुत अच्छा ह्यूमर होता है, कराची आइज का बहुत अच्छा ह्यूमर होता है, लाहौरियों का बहुत अच्छा ह्यूमर होता है, अब सबका ही बहुत अच्छा ह्यूमर होता है. तो वो Mm-hmm. क्यों होता है? बिकॉज आपका वो डार्क ह्यूमर निकलता है. यू ट्राई टू मेक फन ऑफ द सिचुएशन टू काम योर नर्व्स डाउन. सो हम जिंदा दिल कौम है, इसीलिए तो है क्योंकि हम अपनी जो एडवर्सिटी होती है उसमें से भी वी मेक ह्यूमर आउट ऑफ इट एंड वी ट्राई टू जोक अबाउट इट, एंड दैट shows that we are full of spirit. So हम in the e-com industry at the same time we need to relate to our audiences. We need to be able to follow the trends. Not all trends are, again I'd say कि सारे trends follow नहीं होते हैं, हर किसी के नहीं होते हैं. बट जो भी हम कर सकते हैं, जिस तरह से भी बेहतर एक्सपीरियंस लोगों को दे सकते हैं, तो वो हमें देना चाहिए. Be it through your customer services, be it through your front UI UX of the website, be it through anything, be it through promotions. जैसे अभी आजादी सेल हर ब्रांड की चल रही है, वो इसलिए चल रही है because people are out there in the malls, they're shopping, they're enjoying the festivities and stuff, and they're also shopping. So ये कुछ चीजें हैं जो I feel
हमें रिलेट करती हैं हमारे कल्चर से। Interesting. Right. So, what are the three actionable steps that other businesses can get as a cheat sheet and implement right now in their businesses to grow eventually? I would speak about e-commerce only, Yes. and I would say that सबसे important तीन चीजें हैं ई-कॉमर्स की जो उसको रन करती हैं। ये चीट शीट है। सबसे पहले तो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री है। आपका जो भी टारगेट सेटिंग होनी चाहिए शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द सेल थ्रू। हमेशा आपका 25 से 30% का ई कॉमर्स के ऊपर होता है। अगर बहुत Mm-hmm. अच्छा मंथ है, सेल लगी हुई है, तो आपका सेल थ्रू ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। पर मैं ओवरऑल इन्वेंट्री की बात करूँ, किसी इंडिविजुअल कलेक्शन या कैटेगरी की बात नहीं कर रही। तो हमेशा आपका टारगेट जो है डिपेंड करता है आपके इन्वेंट्री लेवल्स पे। आपके पास इन्वेंट्री लेवल्स है नहीं और आपने 100 बिलियन का टारगेट अपना कर लिया है, या आई डोंट नो, लेट्स जस्ट गिव एक अमाउंट का आप टारगेट कर रहे हो और आपके पास वो इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, तो आपका टारगेट कभी अचीव होगा। सो यू शुड बी पम्प्ड विद द इन्वेंट्री दैट शुड बी देयर। यू शुड हैव द डेप्थ available, you should have the volume available in order to support the revenue that you're aiming to achieve. Second is your ops. If your operations are not aligned, you are screwed. आपने कितनी भी डिजिटल मार्केटिंग कर ली, आपने कितना भी अच्छा फैंसी स्टोर अपना यूआई यूएक्स बना लिया अपना, अगर आपके ऑपरेशंस मौजूद नहीं है, कस्टमर को लास्ट मंथ डिलीवरी टाइमली नहीं मिल रही है, नेक्स्ट डे डिलीवरी या सेम डे डिलीवरी इन द सेम सिटी, और टू डेज इन नेक्स्ट इन अदर सिटी नहीं हो रहा, तो वो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस रुइन करता है। सो दैट इज समथिंग टू वर्क ऑन। Thirdly, and most importantly, your performance marketing. You should be able to set a certain percentage of your net target, and you should be spending money as per that percentage only, ताकि आप overspend भी ना करें, underspend भी ना करें. So these are the few cheat sheets. I feel 3 points I will say could be the cheat sheet to run a successful e-com business. The last one was like my most favorite one. The advertising, and this true. You should set the KPIs actually before starting out anything, and like आप overspend कर दो and you don't get those target achieved, then disappointment is there for you, and you know, so very bad things happens. So there are many listeners that are tuning in might be entrepreneurs. So what practical advice you will give to someone to start getting into like world of e-commerce, especially in Pakistan? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट उसमें सोर्सिंग है। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द राइट प्रोडक्ट दैट यू हैव एंड द राइट प्रोडक्ट दैट यू वांट टू सेल टू योर कस्टमर्स। जब आप वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगेन, जैसे मैंने आपको चीट शीट पे जो हमने डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, इन्वेंट्री लेवल्स क्या है आपके, और आप क्या अचीव रेवेन्यू करना चाह रहे हो, वो Mm-hmm. आपका लाइन होना चाहिए। सेल थ्रू आपका हमेशा 20 to 30% होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टाइप दैट यू आर ऑफरिंग टू योर कस्टमर्स, राइट? अगर वो आपके पास अलाइंड है एंड आपका ऑप्स अलाइंड है, आपको पता है कि हम अपनी लास्ट मंथ डिलीवरी टू द प्रिंट दे रहे हैं, हमारे कुछ किसी इश्यूज नहीं आ रहे, हमारी कस्टमर सर्विस आफ्टर लास्ट मंथ डिलीवरी, हमारी कस्टमर सर्विस ऑन पॉइंट है, हम अपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम उसके साथ हर मीडियम पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारा कस्टमर लाजमी हमारे पास एज अ रिटर्न कस्टमर हमारे पास आएगा, एंड दैट कस्टमर विल कीप बाइंग फ्रॉम अस। These are the few things I feel are very important in order to build your e-com business. अगर ये चीजें आपके पास, और कैपिटल ऑफ कोर्स आपके पास एक होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आपका जो स्पेंड परसेंटेज है, वो आपको एक सेट आप कर लें कि भाई मैंने इतना स्पेंड करना है, ये रेवेन्यू मेरा है, तो आपको एक्चुअलाइज करना होता है अपना टारगेट उन सब चीज फैक्टर्स को अपने हाथ में रख कर। तो ये चीजें अगर आपकी अलाइंड है, देन यू विल बी एबल टू हैव योर ई कॉम बिजनेस अप एंड रनिंग। एंड उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जो आप कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहे हैं ऑन द फ्रंट एंड ऑफ योर वेबसाइट, इट शुड बी वेरी कस्टमर फ्रेंडली। मैंने हमारे पास एक जो है एक रिसर्च अभी हुई थी अलकरम में, जहाँ पे हमने बहुत सारी फीमेल ऑडियंस जो हमारी थी और मेल ऑडियंस थी, उनके साथ रिसर्च कंडक्ट करवाई थी। और उस रिसर्च की कंडक्ट करवाने के बाद ही हमने अपना जो अपनी करंट वेबसाइट है उसका लेआउट हमने डिजाइन करवाया था। इट्स अगेन वेरी कस्टमाइज लेआउट ऑन अ शॉपिफाई थीम, जो हमने बस ऐसे ही रोल आउट कर दी। हमने ये चीज आइडेंटिफाई की कि जो हमारे कस्टमर है वो हमारे जो हेडर पे जो मेन्यू है उसके ऊपर नहीं जा रहा, वो बस होम पेज पे अपने मोबाइल के थ्रू 97% हमारा ट्रैफिक मोबाइल से आता है। तो मोबाइल के ऊपर हमारा जो भी हमारे पास कैटेगरीज अवेलेबल है, जो चीजें उसको उसको होम पेज के ऊपर मिल रही हैं, वो बस वहीं पे क्लिक कर रहा है, वहीं से कैटेगरीज के अंदर नेविगेट कर रहा है। That was a key learning, and that's an insight I'm giving to anybody and anybody and everybody who's listening to this, कि आप अपना पहले जो एक रिसर्च करें और देखें कि आपकी जो ऑडियंस है उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, उसका आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर बिहेवियर क्या है, यूजर जर्नी क्या है, और उसको इतनी सिंप्लीफाई कर लें कि उसके लिए इजी हो जाए।
अच्छा, बहुत से लोगों को, अगर मैं आई वाज़ टॉकिंग टू समबडी बेस्ड इन इंडिया, क्योंकि हमारे पास हमारे काफ़ी वेंडर्स हैं जो इधर-उधर हमारे पास प्लगइन्स होते हैं, उसके लिए और टू Right. एनहांस आवर वेबसाइट प्लगइन्स, तो हम काफ़ी और इंटरनेशनली हमारे काफ़ी वेंडर्स हैं जिनसे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो उसने मुझे ये फीडबैक दिया था कि मुझे ओवरऑल पाकिस्तान रिटेल जो वेबसाइट्स हैं, फ्लटर्ड लगती हैं होम पेज के ऊपर। तो देन शी सेड कि हमारा जो बाइंग बिहेवियर है, यूजर जर्नी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी टेक बेस्ड कंट्री, टेक्नोलॉजी भी फार मोर एडवांस देन अस। तो वहाँ के पे जो लोग हैं वो मेन्यू जो है हमारा नेविगेशन मेन्यू जिसे हम कहते हैं, जो हेडर के ऊपर हमारे पास साइड मेन्यू साइड बार पे होता है, उसके थ्रू ऑपरेट करते हैं। एंड आई टोल्ड हर कि हमारा एक्चुअली उल्टा है, जो होम पेज पे पिक्चर्स नजर आ रही है, पिक्टोरियल व्यू हमारा जरा ज्यादा है। जो Mm-hmm. पिक्चर्स देख के लोग क्लिक करते हैं वो ज्यादा उन कैटेगरीज में नेविगेट कर रहे होते हैं। दैट वाज अ की लर्निंग दैट आई शेयर्ड with her from Pakistan, and she shared her learning that she has from India. तो आपकी ऑडियंस, Amazing. हर ऑडियंस सेम नहीं होती, हर ऑडियंस का बिहेवियर सेम नहीं होता, तो आपको उस हिसाब से अपना जो है एक्सपीरियंस जो है डेवलप क्रिएट करना होता है। तो या Nice. This is a new one from an India. Good lessons. Thank you for sharing this. ये मिस हो नो जाता प्रॉब्लम। है. You were, that's perfect. अच्छा चलें. So we are almost in the ending part of our podcast today. So what will you say about the Executive Strategies podcast when I am not there? It has been a good experience having this session with you, and I'm overwhelmed that I was reached out by somebody who's stationed at Toba Texting, because I've never been to that area before. But it's quite refreshing to see that in Pakistan, be it a small city, be it a big city, everyone's moving towards digital, and they're doing some phenomenal work from any and every end corner and nook and corner of Pakistan. So I think it's very refreshing, and I think the only reason I connected with you so promptly was also because of the fact that you're stationed somewhere far off. I've never interacted with somebody stationed there. I've never been to that place, but it's refreshing that today we're connected and we're having a conversation. And inshallah, this will be a long-term relationship as well. So I'm Inshallah. pleasantly surprised, and I'm extremely happy and grateful for you to, get in touch with me. And I'm grateful to be invited to this podcast. Thank you. Thank you so much, and thank you for telling me again that stomach fixing is a small, small. Actually, And so I didn't mean it that way. yeah, I didn't mean it that way. I understand, But but let me get it there. Actually, this is a city where education is like when Punjab is on the second, and I've personally been into marketing for almost 6 years now, and this is a city that have produced most of the skilled persons, and ever because the opportunities are not here, so many people like left this city, moved to Lahore, Islamabad, and doing great jobs and all those things. So yes, so this was all it for the podcast. I really enjoyed it, and my main motive is to teach people to fish for life through this podcast, and how people are living it, and how you could start your journeys if you are, and how the major brands are doing it. So I wanted to showcase that, and I'm doing it like virtual podcast, so I got an opportunity to like take on guests from America, from Canada, from Australia, all over the world, and I'm doing it, alhamdulillah, for years now. that's amazing. I actually learned something from you as well today. And I'm always looking to learn something or the other from everyone. So I think that's a good learning from me as well. Thank you so much for sharing your journey and telling me something about overthinking that I was not aware of. Thank you. So that's all, Nida. Anything you Thank wanted you to so add? much. No, this is it from my end. Thank you so much for inviting me. Thank you. And thank you, Hafiz. Allah Hafiz.